Hi, good afternoon. Welcome to ICRA. Thank you so much, sir. Please tell us your name and about what you do. Sir, my name is E.R. Deepak Garg. So we are from Core Champ Technologies Private Limited. I am the founder and CEO. So we are creating multiple electronics kits, which is STEM kits for the K-12 segment in school students. So, K-12 segments, that means from prep to all the way to 12th, right? Yeah, yeah. So, what is it? What you actually do? So we are creating multiple electronics kits to making learning fun and to enable students to learn experiment in the field of STEM education, science, technology, engineering, mathematics. Okay, so how do you come up with such idea? I have done BTech and MTech in electronics and communication engineering. So my field is electronics. So I have skills in embedded system. So these all our products are embedded system, embedded based projects. So using embedded technology, we can create such kits like where we can club hardware and software and making multiple kits and solving unlimited problems in our India. Okay. I have an elder brother, and he got a young kid out there. So what he does is he's about 7 years old. So what he do is like he turns on, the door of the refrigerator every now and then just to see how this, bulb glows. Actually, everywhere now everything is related to technology. Like you are saying that when we are opening the fridge, the automatic valve is getting open. So there is IR sensor. Whenever we push up the door of fridge, then automatically sensor will detect that there is some object, and then automatically light will get on. And when we will push back, and the automatically valve will get off. Okay. And how your technology and the work that you can, help uh, the young kids out there. Actually, we are setting up adult tinkering labs and robotics labs in schools. So till now, we have set up more than 500 labs in pan India. So where our engineering are visiting there, and they are teaching to students with the practical learning. We are providing our kits like IoT kit. So with IoT kit, they are getting know about the how automatic wireless things work, and we are also providing agri-tech kit, biomedical kit, water sanitation kit. So with using of these kits, the students are like learning about all these are robotics things. Okay, that seems interesting. I mean, being a non-technical guy myself, I think if it you were there already, so I would have learned a lot of things myself. Yeah, you can learn, sir, that at grade third, we can start robotics learning. We are already teaching grade third students. So can you show us some few of your maybe products? Yeah, sir, we can show. Like this is our IoT kit. By using these kit, students can learn about how automatic door can open, how automatic lights will get on and off, and some more kits are there. Like, this is agri-tech kit. We can use this kit to measure the health of plant. So there is one plant. So if I just want to measure how much water is there in that, so we can put the soil moisture sensor, and the soil moisture sensor will detect the soil and will send the signal to brain Arduino, and then we can display on our mobile with the coding, so we can get to know that how much water is there, and we can also measure the humidity, temperature, pH of water, and some more kits are there. So this is biomedical kit. Usually we purchase temperature sensor from medical shop. We Yeah. just use. But actually we are selling this kit as a learning. So we are providing open source sensor so students can create their own temperature sensor, and can get to know that how stethoscope work, how humidity sensor work, how temperature sensor work. So we are providing edutech learning solution to school students at young age. तो बच्चे थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सिक्स क्लास, अब वो ऑलरेडी इंजीनियर हो जाएंगे आपके प्रोडक्ट्स लेके तो इट्स अ कंपटीशन फॉर मी. Yeah, yes sir, we are doing that. We have done BTech and we just हमें जो जितनी भी नॉलेज है सब 12th के बाद ही पता चली है कि इसमें इंजीनियरिंग में क्या है.
तो आज हम थोड़ा सा उस चीज़ को बच्चों को प्री क्लासेस तक लेके जाना चाहते हैं, केजी तक लेके जाना चाहते हैं, 6 क्लास तक लेके जाना चाहते हैं। तो हम जो किट्स डिज़ाइन कर रहे हैं सच वे डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि बच्चे उसी एज पे जाके अपना जो आगे का उसकी किस फील्ड में जाना है वहीं पे डिसाइड कर सकें। अभी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में बहुत सारे, अब स्कूल्स में देखोगे CBSE एग्जीबिशन होती हैं, साइंस कांग्रेस एग्जीबिशन होती है, बच्चे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं, अवार्ड्स विन करते हैं, बट आगे जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो वहीं पे उनका जो जितनी इनोवेशन थी वो इन आइडियाज़ तक ही रह गई। हम उस आइडिया को आगे मार्केटेबल प्रोडक्ट पे ले जाने के लिए हमने एक सर्विस अपनी लॉन्च की है, एक सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सो नाउ यू हैव एन आइडिया, स्टेप 1, जस्ट अगर आपके पास कोई भी आइडिया है, कोई भी सर्किट है, जस्ट आप हमें व्हाट्सएप पे अपना रॉ डिज़ाइन शेयर करो, हम उसको PCB में डिज़ाइन करके आपको सेंड करेंगे। आप उसको वेरीफाई करो कि मेरा सर्किट ओके है, एंड देन हम उसका प्रॉपर PCB, आप ही के उसका सेंसर देखो, ये हमारे नाम का ये कोर चैम्प, तो आप ही के नाम का जो सेंसर है हम उसको बना के आपको भेज देंगे। अगर आप इसके बाद चाहते हो कि मेरे को प्रॉपर एक प्रोडक्ट चाहिए, सेंसर्स बन गए हैं, तो हम रैपिड प्रोटोटाइपिंग यूज़ करके प्रॉपर इस तरीके का रेडीमेड प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। तो आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, यंग एज से। हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं तो वो बाहर जाके जॉब करने से अच्छे यहीं पे जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने और अपने प्रोडक्ट्स बनाएं और सेल करें, ताकि हम चाइना से जो हमारी कंजम्पशन हो रही है उसको आउट ब्रेक करें। और हमारा जो मिशन है टू फोस्टर दी कंज्यूमर टू क्रिएटर माइंडसेट एंड यंग माइंडसेट, वो हम अपना इसमें सक्सेसफुल हों इस चीज़ में। That is wonderful, and thank you so much for sharing all that. So let's go consumer to creator. और ये ढूंढने के लिए all you need to do is just type in Core Champ and we can find you, right? Yeah. Perfect. Thank you so much for your time. Thank you so much.